वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Multiple choice questions. Q1. एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा 0. Pi r. 2r. 2 pi r. Q1. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be A. 0. B. Pi r. C. 2r. D. 2 pi r. Q डॉट दो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। To quetzales, the rate of change of velocity per second is known as A. Distance, B. Displacement, C. Velocity, D. Acceleration. Q डॉट तीन निम्न में से किसकी S डॉट I इकाई ms सुपरस्क्रिप्ट 2 है? विस्थापन, त्वरण, वेग। इनमें से कोई नहीं। 3 quetzales m/s2 is the SI unit of displacement, acceleration, velocity. None of them. Q डॉट 4 दूरीसमय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? विस्थापन, त्वरण, वेग। इनमें से कोई नहीं। For quetzales, the slope of distance time graph is distance, displacement, velocity, acceleration. Q डॉट 5 न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? A. B. C. D. 5 quetzales. Which law is also known as the law of inertia? A. Newton's first law of motion. B. Newton's second law of motion. C. Newton's third law of motion. D. Law of conservation of momentum. Q डॉट 6 किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? वस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का आकार। 6 quetzales. Inertia of a body depends upon A. Acceleration of the body, B. Mass of the body, C. Velocity of the body, D. Shape of the body. Q डॉट 7 न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इनमें से कोई नहीं। 7 quetzales. Which Newton's law of motion gives the definition of force? A. Newton's first law of motion, B. Newton's second law of motion, C. Newton's third law of motion, D. None of these. 8 quetzales. 10 मीटर सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा?
2.5 kg.m/s. 5 kg.m/s. 0.5 kg.m/s. 50 kg.m/s. 8 quetzales, momentum of a body of mass 0.5 kilograms moving with the speed of 10 meters per second is 2.5 kg.m/s. 5 kg.m/s. 0.5 kg.m/s. 50 kg.m/s. Q.9 जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इनमें से कोई नहीं। 9 quetzales when a bus starts from rest. Suddenly the passengers standing on it lean backward in the bus. This is an example of Newton's first law of motion. Newton's second law of motion. Newton's third law of motion. None of these. Q.10 कार्य की सी इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, वाट, जूल, न्यूटन। 10 quetzales, what is the SI unit of work? Kilowatt hour. Watt. Joule. Newton. Q.11 चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 240 kilograms. 392 N. 240 N. 400 kilograms. 11 quetzales. The mass of the body on Moon is 40 kilograms. What is the weight on the Earth? 240 kilograms. 392 N. 240 N. 400 kilograms. Q.12 जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे के रूप में जाना जाता है। अपवर्तन, परावर्तन, विरलन, संपीड़न। 12 quetzales. When a body vibrates, it compresses the air surrounding and forms a high-density area known as dash. Refraction. Reflection. Rarefaction. Compression. Q.13 वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? A. B. C. D. 13 quetzales. The phenomenon where a sound produced is heard again due to reflection is called interference. Mirage. Echo. Refraction. Q.14 निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। 14 quetzales. In which of the following substances the force of attraction between the particles will be the least? Carbon dioxide. Milk. Cotton. Sugar. Q.15 किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? 0 degrees Celsius. 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius. 100 degrees Celsius.
15 quetzales. What temperature water will found in both states, solid and liquid? 0 degrees Celsius. 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. Q.16 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। 20%. 16 2/3%. 25%. 50%. 16 quetzales, 20 gm sugar is mixed in 100 gm of water. Find the concentration of that solution in percentage. 20%. 16 2/3%. 25%. 50%. Q.17 घनत्व का सी मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, केजी घन मीटर, घन मीटर। 17 quetzales. What is SI unit of density? Newton. Pascal. kg/m3. m superscript 3. Q.18 दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? यह समांगी मिश्रण है। यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। यह एक विसंमागी मिश्रण है। ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। 18 quetzales. Which of the given properties is of suspension? It is homogeneous mixture. It does not show Tyndall effect. It is a heterogeneous mixture. These cannot be separated by filtration. Q.19 कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रण। 19 quetzales. By which method will you separate the mixture of camphor and salt? Sublimation. Evaporation. Chromatography. Centrifuge. Q.20 द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। 20 quetzales mass number is equal to the sum of the number of electrons and protons, the sum of the number of protons and neutrons, equal to the number of electrons, the sum of the number of electrons and protons. Q.21 NH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 16U, 13U, 28U, 17U. 21 quetzales. What is the molecular mass of NH3? 16U, 13U, 28U, 17U. Q.22 स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? ए. किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। बी. रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। सी. रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डी. किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है
और नहीं नष्ट किया जा सकता है। 22 quetzales. What is the law of constant proportion or law of definite proportion? In a chemical substance, the elements are not always present in a definite proportion by mass. B. In a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. C. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. D. Mass can neither be created nor destroyed in a physical reaction. Q.23 निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 2 मोल जल, 1 मोल जल, 200 मोल जल, 6.02210 जल के अणु। 23 quetzales. Which of the following correctly represent 36 grams of water? 2 mole of water, 1 mole of water, 200 mole of water, 6.0221023 molecules of water. Q.24 न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है। 1, 0, -1, 2. 24 quetzales. Neutron has _____ charge. 1, 0, -1, 2. 25 quetzales. What is an alpha particle? Negatively charged proton. Negatively charged helium atom. Positively charged proton. Positively charged helium atom. Q.25 अल्फा कण क्या है? ऋणावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, धनावेशित प्रोटॉन, धनावेशित हीलियम परमाणु। Q.26 किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियन। 26 quetzales. The difference in the mass of isotopes of an element is due to the different number of A. Neutron, B. Proton, C. Electron, D. Nucleon. Q.27 कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, लिपिड। 27 quetzales. Cell wall is made up of A. Protein, B. Carbohydrate, C. Cellulose, D. Lipid. Q.28 निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतद्रव्य जालिका। 28 quetzales. Which of the following cell organelles has its own DNA and ribosomes? A. Golgi apparatus, B. Plastid, C. Lysosome, D. Endoplasmic reticulum. Q.29 किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? 8, 16, 32, 64. 29 quetzales. There are 16 chromosomes in a cell. How many chromosomes will be there in the daughter cell formed as a result of meiosis? 8, 16, 32, 64.
Q.30 दिया गया चित्र किस ऊतक का है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। 30 Quetzales. The given picture is of which tissue? Parenchyma, Collenchyma, Sclerenchyma, Phloem. Q.31 बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। 31 Quetzales. Which tissue is the rind of the almond made of? Parenchyma, Collenchyma, Sclerenchyma, Phloem. 32 मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? A, B, C, D. 32 Quetzales. What is the connective tissue that connects muscles to bones called? Ligament, tendon, cartilage, muscle. Q.33 जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उसकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जनन तरीके। 33 Quetzales. What could be the most basic characteristic for classification of organisms? His residence, their cell structure, their feeding methods, their mode of reproduction. Q.34 नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? A, B, C, D. 34 Quetzales. In which category do blue-green algae fall? Monera, Protista, fungi, plant. Q.35 जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। 35 Quetzales. Which is the largest group of animal kingdom? Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Q.36 दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। 36 Quetzales. Which of the given diseases are caused by viruses? Typhoid, cholera, malaria, corona. 37 Quetzales. संक्रामक रोग के उदाहरण हैं पोलियो, कैंसर, क्षयरोग, मधुमेह। 37 Quetzales. Examples of infectious diseases are polio, cancer, tuberculosis, diabetes. Q.38 ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। 38 Quetzales. Greenhouse gases. A, oxygen, B, helium, C, carbon dioxide, D, chlorine. 39 Quetzales. दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन,
आयरन, कॉपर, मैंगनीज। 39 quetzales. Which of the given nutrients is the macronutrient for the plant? Nitrogen, iron, copper, manganese. Q.40 वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? A, ऑक्सीजन, B, ओजोन, C, कार्बन डाइऑक्साइड, D. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 40 quetzales. What is the toxic molecule of oxygen found in the atmosphere called? A. Oxygen, B. Ozone, C. Carbon dioxide, D. Chlorofluorocarbons. Answers. Here are the answers of above questions. 1 quetzal. Answer, C, 2R. 2 quetzales. Answer, D, acceleration. 3 quetzales. Answer, B, acceleration. 4 quetzales. Answer, C, velocity. 5 quetzales. Answer, A, Newton's first law of motion. 6 quetzales. Answer, B, mass of the body. 7 quetzales. Answer, B, Newton's second law of motion. 8 quetzales. Answer, B, 5 kg.m/s superscript 2. 9 quetzales. Answer, A, Newton's first law of motion. 10 quetzales. Answer, C, joule. 11 quetzales. Answer, B, 392 N. 12 quetzales. Answer, D, compression. 13 quetzales. Answer, C, echo. 14 quetzales. Answer, A, carbon dioxide. 15 quetzales. Answer, A, 0 degrees Celsius. 16 quetzales. Answer, B, 16 2/3%. 17 quetzales. Answer, C, kg/m superscript 3. 18 quetzales. Answer, C, it is a heterogeneous mixture. 19 quetzales. Answer, A, sublimation. 20 quetzales. Answer, B, the sum of the number of protons and neutrons. 21 quetzales. Answer, D, 17U. 22 quetzales. Answer, B, in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. 23 quetzales. Answer, A, 2 mole of water. 24 quetzales. Answer, B, 0. 25 quetzales. Answer, D, positively charged helium atom. 26 quetzales. Answer, A, neutron. 27 quetzales, C, cellulose. 28 quetzales, B, plastid. 29 quetzales, A, 8. 30 quetzales, A, parenchyma. 31 quetzales, C, sclerenchyma. 32 quetzales, B, tendon. 33 quetzales, B, their cell structure.
34 quetzales, A. Monera. 35 quetzales, B. Arthropoda. 36 quetzales, D. Corona. 37 quetzales, C. Tuberculosis. 38 quetzales, C. Carbon dioxide. 39 quetzales, A. Nitrogen. 40 quetzales, B. Ozone. ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैंपियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।